Welcome back to our YouTube channel. In today's video for class 11th biology, we'll discuss second chapter biological classification. Aristotle was the first person to attempt biological classification using a scientific approach. एरिस्टोटल ने बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के लिए उन्होंने प्लांट हाइट चूज किया एज वन ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑन दैट बेसिस ही डिवाइडेड प्लांट्स अमंग ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स. एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए ही included all the animals having red blood in one of the category और दूसरी कैटेगरी में उन्होंने उन एनिमल्स को डाला जहां पर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है. So next is classification given by Carl Linnaeus. इन्होंने two kingdom system of classification को propose किया. अब यहाँ से हम लोग kingdom system of classification में enter कर रहे हैं. So he put all the plants in one category and all the animals in the other category. But then हालांकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक इजी और अंडरस्टैंडेबल तरीका था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम. There were a number of organisms which did not fall into either category. ये ना plants होते हैं ना animals होते हैं. इसलिए अब हमें एक explanation की ज़रूरत थी. We needed more kingdom where we can put these organisms which do not fall into either category. इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि 1735 में प्रपोज किया गया था, बहुत लंबे समय तक इसे यूज भी किया गया, लेकिन अब इसे इनएडिक्वेट मान लिया गया और अब एक नए किंगडम की जरूरत पड़ गई. Considering this, Ernst Haeckel in 1866 he suggested another kingdom known as Kingdom Protista to include those microorganisms which are neither plants nor animals. So now according to Ernst Haeckel तीन kingdoms आ गए. इनमें किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है. किंगडम प्लांटी is for plants, kingdom animalia is for animals and kingdom protista includes all those organisms which are somewhat similar to plants and somewhat similar to animals but they are not completely plant or animal. They might have some similarity with both plants and animals, but typically they are neither plants nor animals. So now we have this kingdom Animalia to include the animals, kingdom Plantae to include the plants, and kingdom Protista to include the microorganisms. So now there was a problem associated with three kingdom and all the earlier classification systems proposed so far. जितने भी पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को एक कॉमन किंगडम किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया था, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल पाया जाता है. लेकिन साथ ही साथ ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. दे डिफर वाइडली इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंस इतना ह्यूज है कि इनमें कई सारे प्रोकैरियोट्स हैं और कई सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो बिकॉज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम रह गया कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक ही किंगडम में इंक्लूडेड हैं, वी नीडेड टू रिजॉल्व दिस. एंड टू डू दिस, Copeland in 1956 proposed another kingdom known as Kingdom Monera or Kingdom Mycota, which includes prokaryotes now. So rest of the three kingdoms they are as such. सिर्फ prokaryotes को kingdom protista से निकाल करके अब kingdom monera में डाल दिया गया. Right? So we have now four kingdoms, monerans that include prokaryotes such as bacteria and blue-green algae, kingdom protista for all the eukaryotic microorganisms, kingdom plantae with plants, and kingdom animalia having all the animals. But then we also encountered another issue in this. There wasn't any differentiation between heterotrophs and autotrophs. You know that
The organism that can photosynthesize and produce food, they are known as autotrophs. Plants, green plants, they are considered as autotrophs. And heterotrophs are those organisms which cannot synthesize their own food. They cannot have photosynthesis taking place in their body. So यहाँ पे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स और फंगी को एक ही ग्रुप में रखा गया था जिसे अब हटाने की जरूरत है. So then, so to separate fungi from plants, R.H. Whittaker in 1969, he proposed another kingdom known as kingdom fungi to include all the eukaryotic multicellular heterotrophic organisms that has characteristic chitinous cell wall. The main criteria for classification by Whittaker included structure of cell, body organization, mode of nutrition, reproduction, and the phylogenetic relationship. So now the total five kingdoms are kingdom Monera for prokaryotes, kingdom Protista for eukaryotic microorganisms, Plantae for plants, Animalia for animals, and fungi for all the fungal species. Let us consider the major characteristics. In 1990, Carl Weiss proposed the sixth kingdom. He actually proposed three domains. He divided kingdom Monera into two domains. इन्होंने तीन डोमेन प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ 16 SR RNA. और जो तीन डोमेन्स बन के आए वो थे आर्किया एंड बैक्टीरिया दैट वेर सेपरेटेड फ्रॉम kingdom Monera and eukarya that contains all other four kingdoms. Domain now became a category higher than kingdom in the taxonomic hierarchy. Domain kingdom से ऊपर आएगा अब. और ये तीनों डोमेन्स एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं जिसका नाम इन्होंने प्रपोज किया प्रोजीनोट. In this phylogenetic tree of life, you can see the purple color denotes bacteria. That is sometimes also referred as eubacteria because it includes all the true bacteria. Archaebacteria is a domain for all the primitive bacteria. Eukarya is the third and final domain that contains all rest of the four kingdoms like kingdom Animalia, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and the kingdom Protista. That's all for today. In next video, we'll talk about Kingdom Monera. Stay tuned and please subscribe our channel. Thank you.